हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स क्लाउड। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे एंड मनी मैट्रिक्स क्लाउड का पूरा जम के फ़ायदा उठा रहे होंगे क्योंकि ये अभी फ्री है। इट्स अवेलेबल फॉर फ्री टू एवरीवन। एंड पिछले वीडियो पे मैंने नोटिस किया था कि कुछ यूज़र्स को काफ़ी परेशानी हो रही है व्हेन दे ट्राई टू यूज़ अदर एपीआईज लाइक धन एपीआई और एंजल वन एपीआई. I didn't receive any comments on the Zerodha API. Perhaps maybe you are not using any Zerodha API, but most probably because it's actually cost money on a monthly basis, which is fine because you now have access to the free APIs like Fires. It can be Angel One, but when it comes to Dhan, मुझे लगा था कि धन API एक्चुअली में फ्री है, बट धन API इज़ नॉट entirely free. When I checked, I noticed that धन API has two versions, two variations, right? The first is the trading API and the second is the data API. And the API that we need to connect on our platform is the data API. And Dhan's data API is not free. It is a paid version, right? Trading API से काम नहीं चलेगा because our platform is a data processing tool. It processes the raw data and throws the end result on the screen. It helps you to interpret meaningful information from raw data. And for that, we need an API which can deliver us or provide us raw information or raw data. Right? So this is why when you use Dhan API, you need to use the Dhan data API. Without data API, it's not going to work. And then we have the Angel One API. Regarding Angel One API, I received few complaints that Angel One API is not working. And when I checked, yes, I noticed that there were some issues, some challenges, some bugs that were there in the API code that we have coded in our script. And we then tried to fix those errors, and almost 90 to 95% I'm confident now that it's actually has been fixed, because right now when I log in using the using the Angel One API, I don't see any errors. But there is a catch with the Angel One API is that the Angel One API, अगर आप मार्केट आवर्स में एंजल वन एपीआई को यूज़ करते हो तभी वो काम करेगा, मार्केट आवर्स के बाद वो काम नहीं करेगा. If you try to access the data using Angel One API on weekends or after market hours, it will not work. Because the data provider, that the Angel One brokers, they simply will not provide you the data after the market hours. During the market hours in the live market, if you request them to provide the data, then only they will provide it. Otherwise, they will not provide the data. दैट इज़ वन लिमिटेशन विद द एंजल वन एपीआई. इसके कारण क्या होता है कि एंजल वन एपीआई के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना अब लिमिटेड हो जाता है. हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते. हमें बस अगर कुछ करना है तो मार्केट आवर्स में ही करना है, देन उसके बाद यू कांट यूज़ इट बिकॉज you will not able to see any information on the platform, right? But that's not happening in case of Fires API. Fires API is quite versatile, is way more effective, because as you have already known, we have been using the Fires API almost from the very beginning. And what I've seen till now is that Fires API is actually performing well compared to the other APIs. I am not comparing Fires API with the paid version of the APIs from other brokers like the Zerodha or maybe the Dhan data API. They can be faster, but Fires API, since it is free, it gives you the best result that you actually need to trade. What else do you need? So this is why I always recommend to use the Fires API. But since now I am implementing other APIs on the platform, I need to make sure that those APIs are in working conditions for you. When you try to use it, it should work. If it doesn't work, yes, obviously you raise complaints about it and then we fix it. So we have fixed the Dhan API. We have also fixed the Angel One API. एंजल वन का API जो है उसका एक फाइनल टेस्ट करना बाकी है, जो कि हम लोग मंडे मार्केट में करेंगे. Right now, if I log in with the
Angel One API, I don't see any issues. It's actually getting connected, and we have error diagnostic log at the back end that we will be tracking from our end when the market is active. That is tomorrow on Monday, and we will see if there is any error or not. If there are no errors with the Angel One API, then we will leave it as it is. And if there are any errors, then perhaps we will try to fix it during the market hours. I'm not sure if I should do that, because during the market hours, if I try to push any update from our end on the platform, you might see some disturbance at your end. ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कुछ अपडेटेड फाइल पुश करूँगा, देन आप अपनी तरफ से जब प्लेटफॉर्म को ओपन करके रखे हो एंड उसको यूज़ कर रहे हो, उस वक्त हो सकता है कि प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, लॉग आउट हो जाए, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, राइट, कि ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया। वेल, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये मेरे कारण ही होगा अगर मैं कोई अपडेट पुश करता हूँ तो। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मार्केट आवर्स में मैं कोई अपडेट पुश ना करूँ, बिकॉज आई नो वी हैव पीपल हु आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म and they are actually making money. So I'm not sure about everyone, but I am pretty sure that there are people who are making good money on the platform. I'm getting some messages as well. Although मैं messages का ज़्यादा reply नहीं देता हूँ, I don't really get involved to that level, but I am pretty sure people who follow our channel, they have been reaping the benefits since the very beginning. People, especially the smart traders, full-time traders, they know exactly very well what's happening, how to use such information for their own benefit. I'm not very sure about the working professionals and people who are beginners, but I'm pretty sure about the professional traders who are following us, right? And some coders and programmers also watch our channel, so which is also quite cool. So yeah, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हमने किया है, एंड इसके साथ साथ कुछ नए फीचर्स भी हमने ऐड किया है। फॉर एग्जांपल द न्यूज़ टैब, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था न्यूज़ टैब हम लोग ऐड करेंगे, और उसके साथ साथ मैंने एक और टैब ऐड किया है विच इज़ द ऑप्शन सिमुलेटर, राइट। इन ऑन आवर लास्ट वीडियो देयर वाज अ कमेंट बाय समवन टू ऐड ऑप्शन सिमुलेटर. So I thought, why not do that? Option Simulator is quite a cool feature that can be added on the platform. So I decided to add that as well. So let me share my screen and let me show you the new things that we have bought for you on the platform. So दोस्तों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है ना, आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ हूँ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, एंड यहाँ पे मेरा एंजल वन का जो कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, बट अगेन सिंस आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ऑन संडे, आई विल नॉट बी एबल टू सी द डेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट आवर्स के बाहर ये एंजल वन का ब्रोकर आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा. दे विल ओनली प्रोवाइड यू डेटा ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट टुमारो कि डज दिस पर्टिकुलर API कनेक्टिविटी वर्क्स इन द मार्केट आवर्स एज वेल, बिकॉज इसको सही करते करते, इसको ठीक करते करते काफ़ी टाइम लग गया हमें. इसका जो एरर डीबग जो हमने किया था लास्ट थर्सडे एंड फ्राइडे किया था, बट उस टाइम जब हम लोग इसका एरर्स को डीबग कर रहे थे, देन वी एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बाय दैट टाइम द मार्केट एक्चुअली गॉट क्लोज्ड. सो हमें कभी समय ही नहीं मिला इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करने का. सो द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वी आर गोइंग टू गेट टुमारो ऑन मंडे, एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस इन द लाइव मार्केट. ऑल्दो ये जितना भी अपडेट्स है मैं आज ही पुश कर दूंगा, एंड आपको सारा एक्सेस आज ही मिल जाएगा इन सभी अपडेट्स का. यू विल बी एबल टू यूज़ इट, यू विल बी एबल टू सी इट एवरीथिंग, and if there is any error you can see that error as well. I will be also checking it, and I will be tracking all the errors and all the bugs that might appear if it doesn't work in the live market. All right, so there is nothing to worry about. I am here with you, I am supporting you from behind. If there is any challenge, just comment, I will be watching and I will be fixing the issue, right? सो ये है आपका एंजल वन का API. ये अभी कनेक्टेड है, बट अभी कोई डेटा क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं करेगा. तो मैं इसे डिसकनेक्ट कर देता हूँ, एंड डिसकनेक्ट करते ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मैसेज है, द हेल्प
news and option simulator tab are freely accessible without any broker connections. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने नया टैब्स ऐड किया है, ऑप्शन सिमुलेटर एंड न्यूज़ टैब. विथ दैट वी हैव द हेल्प टैब. हेल्प टैब हमने लास्ट टाइम ऐड किया था. इट्स क्वाइट हेल्पफुल. जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जितने भी फीचर्स अवेलेबल है, उन सभी फीचर्स का एक्सप्लेनेशन एंड यूज़र गाइड यहाँ पे दिया हुआ है. कैसे एपीआई कनेक्ट करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है. पहले वो साइड बार में था, लेफ़्ट साइड बार में, वहाँ से हटा के हमने यहाँ पे दे दिया है. लेफ़्ट साइड बार में देने से प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी अनटाइडी हो जाता है, दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता, राइट. ये मैंने नोटिस किया. सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ से हटा के इसको मेन स्क्रीन पे लाया जाए, ताकि वहाँ से अच्छे से दिखे और समझ में आए कि एग्जैक्टली कौन से ब्रोकर के एपीआई को कैसे कनेक्ट किया जाए, राइट. So this is something I have done from my end to make sure that all the information is easily readable, accessible to the user, right. So this is something we have done so far. And then we have the news tab here. It actually provides you explanation on how the news tab actually works. You can go through once this update is released today. दोपहर से लेके शाम तक में ये अपडेट मैं रिलीज़ कर दूंगा. मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो रात को ही लॉन्च होगा. एंड वंस यू सी दिस वीडियो, जस्ट एक्सपेक्ट दैट द अपडेट हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, राइट. एंड देन वी हैव द option simulator. In option simulator also we have provided the guide how to use the option simulator. It's quite easy to use. इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश समझ में आता है तो वो भी इसे आराम से यूज़ कर लेगा. एंड जो प्रोफेशनल लोग हैं उसके लिए तो ये गोल्ड माइन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राइट. So for experienced traders, this is a gold mine. But for beginners, I'm not sure how well they can actually use it. But I believe that you should start learning how to use these platforms, how to use these features, because it's going to be very helpful in future for you, right. So let's begin. Let me first connect with the Fires API, because my first preference is always Fires API. मैं हमेशा Fires API यूज़ करता हूँ. So let me first connect with my API and then I can actually show you the changes, right. And हमने कुछ स्मॉल चेंजेस भी किया है स्मार्ट चार्ट्स में. मैं आपको वो चेंजेस दिखाना चाहता हूँ. ओके दोस्तों, मैंने अपना फायर्स एपीआई कनेक्ट कर लिया है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. एंड जैसे ही मैं यहाँ पे डिकोड मैट्रिक्स पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे डेटा दिखता है. बट ये पुराना फ्राइडे का डेटा है, ये अभी नया डेटा नहीं है, बिकॉज अभी वीकेंड है. एंड जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होगा वैसे ही यहाँ पे डेटा अपडेट होने लगेगा, राइट. सो लेट्स मूव टू दी स्मार्ट चार्ट्स. इन द स्मार्ट चार्ट्स लाइक वी हैव फ्यू चेंजेस. आप जैसा कि देख सकते हैं स्मार्ट चार्ट्स में अभी आपको प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एंड यहाँ पे ये सभी इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगे, लाइक डेली ओपन. If I can just make it a full screen chart, I can show you. Yeah, I can see that these three lines are showing up. And इसके साथ साथ आप जस्ट यहाँ पे लेफ़्ट साइड बार में स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे कुछ नए चेंजेस दिखेंगे. लाइक वी हैव एडेड द 52 वीक हाई लो. So if I just add that, you can see on the screen we have the 52 week high and low. चार्ट को और भी स्मूथ बना दिया गया है so that it's easier for you to use whenever you are trading using this platform. You can see this is the high and then this is the low for Nifty based on the last 1 year data, right. So last 1 year का जो डेटा है वो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है. ये स्मॉल चेंजेस हमने यहाँ पे किया है. एंड बाकी चेंजेस ऑलमोस्ट जो भी अवेलेबल है वो पहले से ही था, उसमें कुछ खास चेंजेस हमने नहीं किया है. इसके अलावा अगर मैं मूव करूं देन आई कैन एक्चुअली शो यू द ऑप्शन सिमुलेटर. दिस इज द न्यू ऑप्शन सिमुलेटर विच यू कैन एक्चुअली यूज टू आइडेंटिफाई हाउ ए पर्टिकुलर ऑप्शन लाइक अ कॉल और अ पुट एक्चुअली बिहेव्स. कैसे उसमें यू नो प्राइस का चेंजेस होता है, राइट, बिकॉज ऑफ वेरियस ग्रीक्स involved. So this is the option simulator. It can actually show you results instantly based on the past behavior, past changes. The price
then we have the delta, gamma, theta, vega, and all the other information you can see. On the left side bar you can see the implied volatility, इसको आप change कर सकते हो as per your requirement. You can see the current spot price, you can see the strike price. करंट स्पॉट प्राइस जैसा कि हम लोगों ने देखा था, वो अभी जो करंट स्पॉट प्राइस है दैट इज़ 23,151, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ. लेट मी जस्ट इनेबल दिस. या आई कैन सी इट्स 23,151. सो इफ़ आई जस्ट कॉपी दैट एंड इफ़ आई जस्ट गो टू द ऑप्शन सिमुलेटर, करंट स्पॉट प्राइस इतना है, एंड देन वी हैव द स्ट्राइक प्राइस. चलो 25,000 का स्ट्राइक प्राइस ही पकड़ लिया. एंड देन वी हैव द CE और द PE. आई विल सेलेक्ट PE नॉट CE. PE में मुझे फ़ायदा हो रहा है इतना. डे ऑफ एक्सपायरी 30 डेज. चलो इस 30 डेज को 3 डेज कर देते हैं. एंड देन आई हैव द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, आई हैव द रिस्क फ्री रेट, I have the lot size. If I increase the lot size to 100 or maybe 150, whatever lot size you want to keep, ये manually आप increase या decrease कर सकते हो. And then we have the entry premium paid or received rupee, right? We can buy or sell. अगर मैं sell पे click करता हूँ या buy पे click करता हूँ position, उसी हिसाब से फिर ये result भी यहाँ पे on the screen change होगा. And then what if scenario यहाँ पे है, अगर क्या हो सकता था अगर मेरा स्पॉट प्राइस कुछ और हो एंड डेज ऑफ एक्सपायरी 3 से 2 हो, या फिर IV जो हो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज समथिंग एल्स. व्हाट कुड बी द स्पेसिफिक चेंजेस. आई कैन सी द ग्राफ हियर, द प्रॉफिट लॉस कर्व, क्या एग्जैक्टली प्रॉफिट हो सकता है एंड क्या लॉसेस हो सकता है. एंड द टाइम डीके प्रोजेक्शन, ये मेरा प्रोजेक्शन टाइमलाइन है. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लाइक डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 0. डे 0 में क्या होता है, डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है, डे 3 में क्या होता है, राइट. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू कैन एक्चुअली एनालाइज हाउ अ स्पेसिफिक ऑप्शन बिहेव्स, whether it can be a call or a put, and how you can actually use this as a weapon in live market, right. So ये आपके एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए है. एंड कुछ लोग बैक टेस्ट करना चाहते हैं ऑप्शन का यूज़ करके, देन ये ऑप्शन सिमुलेटर का यूज़ करके आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो. अगर आपको इसमें कोई एरर या चैलेंजेस या कोई बग्स दिखाई देता है या कुछ परेशानी होती है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन करिएगा एंड डेफिनेटली हम लोग उस पर काम करेंगे, राइट. देन वी हैव द न्यूज़ टैब. इन द न्यूज़ टैब वी हैव नेशनल न्यूज़, वी हैव ग्लोबल न्यूज़, देन वी हैव द स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़. In the national news, we can see the market correlation summary, like exactly what are those topics which correlate with the Indian stock market. We have the crude oil impact, we have the Middle East risk. Right now we have the oil impact, right. Crude oil का impact कहाँ कहाँ किस किस स्टॉक पे पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है. रिलायंस पे, BPCL पे, ONGC पे. मिडिल ईस्ट रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो अगेन सेम कंपनीज पे पड़ रहा है, एंड अगेन जो ऑयल इम्पैक्ट है उसका भी सेम कंपनीज पे ही पड़ रहा है. सो मोस्टली जैसा कि आप सभी को पता है, जो करंट सिनेरियो है उस दुनिया में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, US एंड ईरान वॉर चल रहा है. एंड a lot of people are saying that US has already lost and Iran is actually fighting back. I'm not going in all those stuff, but I can clearly see that for those people who are saying that this particular war is going to end in few weeks or maybe 1 month, no sir, it will not end in 1 month. It's going to go beyond several months. That's what I can see. जो सिनेरियो बन रहा है ना, बहुत ही खतरनाक सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे. The SEBI head is saying that to calm down because it's just a matter of time. कुछ दिन के बाद ये सब रिलैक्स हो जाएगा. नहीं होगा रिलैक्स, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला बात है. कुछ रिलैक्स नहीं होने वाला है. Although India will be a safe haven, India has always been a safe haven for us.
कुछ चैलेंजेस हो सकता है कि हम लोग को फेस करना पड़े एलपीजी को लेके। एलपीजी का कुछ शॉर्टेज हो सकता है, इसके लिए आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि मार्केट में इंडक्शन चूल्हा जो है, इंडक्शन टॉप्स कुकवेयर जो है, उसका शॉर्टेज पड़ चुका है, बिकॉज पीपल नाउ रियलाइज दैट सिंस देयर विल बी नो एलपीजी, what they are going to use to cook their food, so they are actually buying all the induction chulhas from the market. The induction ovens, the chulhas that you use in your home, जो बिजली पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। so इसका शॉर्टेज पड़ गया। मैंने अमेज़ॉन पे चेक भी किया था, तो मुझे दिखा कि ऑलमोस्ट all the premium branded products, the induction chulhas are actually sold out, and कुछ गिने चुने ही बचे हैं। एक बचा था, एक like it was costing around 3,000 rupees, and I actually bought it. यू नो, बहती गंगा में कौन नहीं हाथ धोएगा, मैंने भी धो लिया, मैंने भी एक ले लिया, पता नहीं कल क्या हो। सो इट्स क्वाइट अ डायर सिचुएशन, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। यू शुड प्रिपेयर योर स्टॉक्स, आई मीन योर राशन, नॉट योर स्टॉक मार्केट स्टॉक्स, राइट? बिकॉज ये वार अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर डेज एंड मंथ्स। इट विल नॉट स्टॉप, सॉरी सर। जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था ना, कुछ बुद्धिजीवी लोग यूट्यूब पे बोल रहे थे कि कुछ वीक्स तक चलेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। आज भी ख़त्म नहीं हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म तो हुआ नहीं, लेकिन उसके अलावा और भी वॉर चालू हो गया। वहाँ पे ईरान एंड यूएस फाइट कर रहे हैं, अचानक से यहाँ पे नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स बरसाना चालू कर दिया जापान के सी के पास, जहाँ तक मैंने न्यूज़ पे देखा। सो आई थिंक इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ द न्यूज़ एज वेल व्हेन you are actually trading in the market, because I'm not saying that news is the prime stuff you need to follow before you trade. No, but news is something which helps to keep you updated, right? It gives you a raw overview of what is going on in your environment, because you need to be aware of your environment. If you are not aware of your environment, अंधाधुंध से ट्रेड करने से नहीं चलेगा, right? If you know that a war is going on, and if you know that there is a development in somewhere near Iran, Strait of Hormuz, a lot of people are actually talking about it, and it's quite popular on YouTube. A lot of people are making videos on it. Strait of Hormuz, वहाँ से जितने भी ऑयल टैंकर्स, ऑयल शिप्स, when they try to come, when they try to cross the Strait of Hormuz, they get shot by Iran missiles. I'm not sure if it's Iran missile or if it's Iran drone. Sometimes it's also Iran's suicide boats. They just crash in those big ships and they just sink it down. Crazy. मैंने वो वीडियोस देखा है यूट्यूब पे, एंड इट्स शॉकिंग, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एज वेल। जस्ट इमेजिन क्या होता होगा उन लोगों के साथ जो लोग उस शिप पे है। जान पे खेल के वो लोग वहाँ से क्रूड ऑयल को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, देन उनका शिप डूब जाता है बीच समुंदर में विदाउट एनी हेल्प। यू डोंट नो व्हाट इज देयर इन दैट डीप सी, यू सिंक देयर एंड यू डाई। End of story. And here we sit here, we complain about ration and LPG and whatnot. Perhaps we should be a little more sensitive and try to understand the severity of the current situation, right? So that's what I'm trying to say. सिर्फ ट्रेड ही मत करो, थोड़ा न्यूज़ भी चेक कर लो। इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूज़ टैब को ऐड किया है, एंड आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कोरिलेशन समरी है। अभी जस्ट रिसेंटली मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन है न्यूज़ टैब में, ये अपडेट हुआ है, क्योंकि ये हर 5 मिनट्स में अपडेट होता है। ये इसका एक फीचर है, कोर फीचर। एंड लाइक आई कैन सी द न्यू न्यूज़ एक्चुअली शोइंग अप, एंड अगेंस्ट एवरी न्यूज़ आई कैन सी the 2 tags,
मोस्ट मॉडरेट रिलेवेंस, और यू कैन सी हाई रिलेवेंस. अगर मॉडरेट रिलेवेंस है तो इस तरह का टैग दिखेगा, अगर हाई रिलेवेंस है तो इस तरह का टैग दिखेगा. एंड अगर न्यूट्रल टोन में आर्टिकल को लिखा गया है तो यहाँ पे न्यूट्रल लिखा रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रल लिखा रहेगा. अगर पॉजिटिव या नेगेटिव टोन में आर्टिकल को लिखा गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा रहेगा. सो यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट the level of impact of this news on the stock market, as well as you can also see the tone of that specific news just by looking at the tags, right? And if you want to read the entire article, you can simply click here, read full article, and the entire article will open up for you. You can read the entire article and see what's going on, right? So I will just close this one for now, and I can clearly see other articles as well, like oil prices to hit $150. Wow. uh, this is crazy how Indian stock market may react to as Iran war raise on carries on. So this is something which is also quite important. If you do not track this, it's only you who is going to lose. And it's not just the national news, it's the global news as well. If you just click on the global news, you can see what's going on globally right now, right? You can actually see the changes in the news. Oil loading operations at UAE Fujairah has resumed, media reports. And then we have Air China to resume Beijing. एंड इसका इन सभी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट पे. बेसिकली यहाँ पे आपको फिल्टर्ड न्यूज़ ही दिखेगा, कुछ भी अनाप शनाप यहाँ पे नहीं दिखेगा. ओनली द न्यूज़ विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट, ओनली दोज न्यूज़ will actually show up here. You can actually read the news. You can actually try to find the correlation and figure out how to proceed or how to plan your next trade. It's a very good addition, by the way, for experienced people, for people who are good at correlating things, right? So this is something I have tried to add. And also I can see there is a stock specific news. वेल ये मैं अभी आपको टेस्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो जी न्यूज़ एपीआई के साथ किया हुआ है. वो तभी हम यूज़ कर पाएंगे जब मैं इसे पुश करूँगा ऑनलाइन. मतलब ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा. यू जस्ट नीड टू मेंशन द स्टॉक नेम हियर in this field and then click on search. Once you do that, you will see the stock specific news. सो अगर आपको सिंपली स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ चाहिए तो आप यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे क्लिक करेंगे. एंड अगर आपको ग्लोबल न्यूज़ चाहिए तो आप ग्लोबल न्यूज़ पे क्लिक करेंगे. एंड अगर आपको नेशनल न्यूज़ चाहिए, यानी कि इंडियन न्यूज़ चाहिए, देन आप यहाँ पे नेशनल न्यूज़ पे क्लिक करेंगे. सो दीज आर ऑल द न्यू फीचर्स वी हैव एडेड ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर यू, सो दैट you don't just trade, you explore stuff, right? You explore new information, you explore new ideas, you explore how to correlate things. Correlation is also quite important. How crude oil is going to impact the Reliance Industries, how it's going to impact the ONGC stock, and everything. That's how you correlate, right? How the gold prices are going to impact the stock market. So this correlation helps you to plan in advance on how you will proceed to trade in the next trading session, right? So that's all for now, and probably by next week we are going to introduce ईगल आई. जैसा कि मैंने बोला था, ईगल आई के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे, we will try to add the strategy backtester. Any specific random strategy you build on the platform and then you backtest. You can start with a simple moving average test on the platform, like a 50 moving average का average profit ratio क्या है for the last 10 years or maybe for the last 5 years, and starting from that simplicity to complexity, जहाँ पे आप मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप बैक टेस्ट करते हो, चेक करते हो कि ऑन अ स्पेसिफिक स्टॉक और ऑन अ स्पेसिफिक इंडेक्स, like what could be the result in the past 10 years or the past 5 years, right? So you can do that. And obviously Eagle Eye is the most advanced and sophisticated feature we are going to introduce on the specific platform. I just want to tell you that Eagle Eye is our top notch sophisticated feature.
राइट। एंड इसका जो आइडिया है ना, वो आइडिया हमको मिलता है ब्लैक रॉक के अलादीन से। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ब्लैक रॉक्स अलादीन। ब्लैक रॉक is a company which manages a humongous amount of money. I'm not sure like if they are managing actually trillions of dollars, trillions। एग्जैक्टली कितना ट्रिलियन है वो फिगर मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं वो मेंशन नहीं करूँगा, आप जाके चेक कर सकते हो। दे आर मैनेजिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ये दिस फिगर एक्चुअली इंक्रीजेज एवरी ईयर और मे बी एवरी मंथ, आई एम नॉट श्योर, राइट। they have an application, or maybe I should say a function, a system which is called Aladdin. Aladdin also has correlation theory, and it's not just the correlation theory, it's actually has a lot of stuff in it. It's like a weather forecast, a very sophisticated application, and it also uses AI, Azure AI, if I remember correctly. So जो ईगल आई हम लोग बना रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट उसी लेवल का फीचर है, उस लेवल का या फिर उसके आसपास के लेवल का है, राइट। सो इट्स नॉट अ जोक, यस। द मोमेंट इट इज़ रिलीज्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, it can scan the entire global market, it can find correlations based on various theories that we are going to implement. I'm not going to tell you all the theories we are going to use, but you will know as soon as it is released. And based on those theories, as soon as it is able to find a correlation, it can tell you exactly what can happen with a stock or maybe an index. What will be the probability, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में समझाया था, it will not give you any verdict, right, but it can give you direction, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द ईगल आई, दैट इज़ व्हाट वी आर डेवलपिंग। एज सुन एज दिस फीचर इज डेवलप्ड, वी विल इंट्रोड्यूस दैट फीचर along with strategy back tester, and that will be the end. उसके बाद प्लेटफॉर्म will be launched officially in public, because एक बार ये जो रिमेनिंग दो फीचर्स है, ईगल आई एंड दी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टर, उसके बाद ये हमारा प्लान रहेगा कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हम लोग लॉन्च कर दें। अभी तो ये डेवलपिंग फेज़ में है, एंड जब ये लॉन्चिंग फेज़ में आएगा तो इसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे। इसमें अगर कुछ भी एरर बग रह जाता है तो उसको भी फिक्स कर देंगे। जब सब कुछ फिक्स हो जाएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ प्लेटफॉर्म काम करेगा, देन द प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड। मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट मंथ इट विल बी लॉन्च्ड, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था पिछले वीडियो में, इट विल गेट लॉन्च्ड। सो समय अब आ रहा है धीरे धीरे, टाइम इज़ कमिंग, टाइम इज़ रनिंग आउट फॉर अस। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म, and before we launch we want to make sure that it becomes unbeatable in the market. Yes, and even if you find a way to beat it, I will find a way to make it even more unbeatable. Right? So it will be one of a kind. Let's see what happens. Okay, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि इंडिया में एक नया प्लेयर आ रहा है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइज, एंड वी विल मीट अगेन सून विद अ न्यू आइडिया।